it's just a mapping of zero or non-zero to destination. But in forensic image, the timing is a factor here because it takes a little bit time to compress the data, and then calculation in you can do in both modes. Okay. Okay, preferred. I have already done it. So if you guys don't uh, do hands-on exercise, then what's the point of showing you this thing, how to do forensic image and forensic clone? So I want to know that you are mostly committed to hands-on training, and you want to do this kind of acquisition thing at your end, okay, by using a simple pen drive. Take a pen drive and then saved it the forensic image into your computer. Okay, so I'm not going further because guys, I don't believe you guys have done hands-on. So let's move to some special topic. And सर एक डाउट है। yes, please ask. यस सर। कोई भी जैसे इमेज होगा सर, फोटो वगैरह, जैसे मेटा डेटा में उसका डिटेल, ओरिजिनल डिटेल पूरा आ जाता है फोरेंसिक में। अब कुछ एक फोटो क्लिक करते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग करते हैं और उसका फॉन्ट भी हम चेंज कर देते हैं, जैसे जेपीजी है जेपीईजी में कर दिए, Mhm, कन्वर्ट करके पीडीएफ में कर दिए। उसके बाद mhm. मैं कुछ उसे चेंजिंग करके दूसरे फॉर्मेट में कर दिए, तो ये जाता है लैब में, फोरेंसिक लैब में, तो इसका डिटेल्स पूरा ओरिजिनली पता चल जाएगा। Yes, yes, definitely. Whatever changes you have done, जो भी changes आपने करे हैं फाइल में, conversion, because conversion is definitely you are doing some changes on the data. Okay, you are changing data size, removal of some zero from your file. Okay, so it will detect out in very easy form. Okay, so let's talk about some anatomy of hard drive. It's invisible. So it's a quick tour of about since we have started this forensics, you must know about the hard drive. What's a hard drive? So it's a mechanical drive that has some mechanical parts inside it. So there are different type of hard drives in the market available. Here you can see in this picture. इस पिक्चर के अंदर ये जो आपको डिस्क दिख रही है, circular disk, this is actually called a disk platter, and it contains data. Okay, it contains your data, but in what form? I will tell you in some time. This gray part is the reading writing head. It reads the data, it writes the data, and there are other electronic circuitry. But behind the hard drive, as you can see in your day to day life, there is a board attached to your hard drive through which you can make connections. Okay, so this is the main board you can see in the picture, and there are some special components embedded on this board. It is called microcontroller unit. There is a memory on the board, and there is a VCM controller. It controls the RPM, the rotations of your hard drive. Okay, and there is a special chip called here. It's called flash chip. It's basically called a ROM chip. Okay, or called a U2L chip. It basically contains the firmware of your hard drive. Okay. If you find it difficult, you can let me know. I can explain it multiple times because it's a very tricky topic. The complete forensics, the complete DFIR, digital forensics incident response, very tricky topic.
but it's not difficult one. It has some tricks, okay, in order to get the data. So you must know about how how data moves in your hard drive, in which way, in what form. Okay, so it contains all the hard drive. All the operations are governed by this one MCU, microcontroller unit, or it is called CPU also, central processing unit. It has a RAM for CPU. It has nothing to do with your computer RAM. It's a hard disk RAM. Okay, you have 16 GB RAM in your computer, laptop, so that RAM is different. And hard drive में जो RAM होती है, it is completely different. And it's again and the rotations controller. जितने rotation आपकी होगी hard drive की उसको control करता है ये controller IC. So basically these are ICs. I'm not going into that day because it's very at very nascent stage we are discussing these things. But afterwards we will discuss this thing. See, hard drive is very delicate. Okay, this is the reading writing head on a displatter. This thing you can see over here. The distance between this magnetic head and this displatter is lesser than the thickness of human hair. Okay, हमारा जो ह्यूमन हेयर होता है हेड में उसके थिकनेस से भी कम इसका डिस्टेंस होता है तो इट इज नॉट स्टिक विद द डिस्प्लेटर देयर इज अ गैप बिटवीन दिस मैग्नेटिक हेड एंड दिस सरफेस ओके सो दैट्स व्हाई हार्ड ड्राइव्स आर डेलिकेट इसीलिए कहा जाता है अब अपना लैपटॉप अगर गिर जाए तो क्लिकिंग साउंड आती है हार्ड ड्राइव में से अगर आपका हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया तो उसमें से साउंड आने लगती है तो द साउंड मेनली कम्स बाय कोलिजन ऑफ दिस मैग्नेटिक हेड और इस सरफेस के बीच में जो कोलिजन होता है ठीक है सो बिफोर गोइंग फर्दर लेट मी explain you in what way the data is stored in your hard drive. This is again very interesting thing. Uh, in which manner data is stored in computer or storage device. Let's say hard drive. SSD is completely different. Tell me, if I'm writing this statement in my Word file, it is saved in my computer. Okay. So in which manner the data is saved in a computer hard drive? Binary format, zeros and ones. Okay. 0 and 1. Any other guesses? और कोई बता सकता है? क्या सर सर ये हम नेटवर्क थोड़ा वीक है डेटा हार्ड ड्राइव के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता है? जस्ट लाइक serial wise. सॉरी कम अगेन. जस्ट Sir, लाइक serial wise होता है. सीरियल. व्हाट इज सीरियल वाइज? सर हार्ड ड्राइव जो होती है वो साटा फॉलो करती है. नहीं वो ठीक है. लेट्स से आई हैव रिटन माय हार्ड ड्राइव इंडिया. सर हार्ड ड्राइव में जो डेटा होता है सर वो स्लॉट वाइज होता है ना सेव कि पहले एक डिस्क होगी उसके बाद दूसरी मतलब हैश की वैल्यू That is what we are explaining the functions of hard drive. One disk, then second disk. I'm asking if I write India here, in which manner फिजिकल स्टेट के अंदर डेटा मेरा हार्ड ड्राइव में किस मैनर में होगा? क्या 0 and 1 आई गो हैश की वैल्यू इस तरफ से स्टोर है. Okay, one answer is ASCII values. Means there are some special characters, okay, written in hard drive. ऐसा ही ये बता रहे हैं. लेट्स से मैंने इंडिया अगर अपने हार्ड ड्राइव में सेव करा, इंडिया एक फाइल मैंने लिखी वर्ड फाइल एंड देन वर्ड फाइल वो सेव करी हार्ड ड्राइव में,
तो यू मीन टू से दैट इसका SKI वैल्यू सेव होगा मेरा हार्ड ड्राइव में, एंड अदर पर्सन इज सेइंग दैट बाइनरी सेव होगा, 0 and 1s. Any other guesses? बाई साइज में बीट और बाइट में सेव होता है सर। A bit and byte is a representation of a data. Let's say uh, uh, 8 bytes. 8 byte, uh, yeah, 8 bit is equal to 1 byte. Okay. ऐसे ही होता है. Yes, sir. 1 byte is equal to 8 bits. Let's say your bits. Bits is a state of 0 or 1. Let's say 0 1 0 1 1 1 0 1. So it's like 4 characters. So it's equal to 1 byte. What I'm asking that, is it actual a 0011 written on the hard drive? That is my question. Okay. Now let me explain this in a very easy way. Uh, do you know magnetic flux? Anybody have ever heard of this term, magnetic flux? Yes, sir. Basically, a magnetic field surrounds a magnet or conductor carrying a current. Okay. किसी भी मेटेलिक एलिमेंट में, किसी भी मेटेलिक मीडियम के अंदर जब भी करंट पास होता है, जब भी करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होती है. ठीक है, उस फील्ड को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. ओके. और उस फील्ड का कुछ पोर्शन, उस फील्ड का कुछ पोर्शन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. आई विल शो यू सम इमेज. लेट्स सी. एक कंडक्टर में एक करंट फ्लो हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और इधर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. ओके. जो इसके नियर बाय रीजन है वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होता है. तो लेट्स से अपर रीजन है, ये लोअर रीजन है. इस रीजन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स. और मैग्नेटिक फ्लक्स ही स्टोर होता है हमारे हार्ड ड्राइव के अंदर. ओके. लेट मी बी वेरी क्लियर, दिस इज एक्चुअल अबाउट हार्ड ड्राइव, not SSD. So 0 and 1s are in form of magnetic flux. Okay. So magnetic flux has, in this way, low flux is treated as 0 and high flux is treated as 1. Okay. Now, here you can see the directions, the arrow directions. The arrow directions actually tells the flux direction. Okay. So this is a hard drive surface cross-sectional view. The data is stored in this manner in a hard drive. And this hard drive geometry or the technology of storing the flux in this horizontal direction is called uh, longitudinal recording. Okay. या फिर HMR, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग. तो ये जो आपको एरोज दिख रहे हैं, these are एक्चुअल में फ्लक्स है. द मोमेंट a one arrow changes direction, okay, the moment the one arrow changes direction, then the change in direction will treat it as
either 1 or 0. Okay, let's say an algorithm is designed in such way that this direction is treated as 1. So where is the part file? Okay, so using this image, okay, so yes. Let's say the arrow which is treated as this one. Okay, the arrow which is treated as this, it is comes out to be 1 as per algorithm, and the arrow which is treated as this, it comes out to be 0 as per algorithm. So what actual happen is, how data is written is 1 1 0, and then change in direction 1 1, and then change and then 1 1. Okay, so this is how data is represented in hard drive. Okay, now let's say this one. This is how data is written in hard drive. This is 1 byte of data, and there is a formula, and there is a method to convert this 0 and 1s into character format. Okay, there is a simple and shortcut way. You can open your calculator, go to programmer, okay, go to binary, and just write down the number 1 1 0 1 1 0 1 1. Okay, so in binary you have the conversion of two. So it's basically 219. It's basically actual data is 219. So when 219 is written on your hard drive, this thing, this 219 number is converted into this thing, and then this thing will convert it into flux. Okay, so let's say this is how it goes. This one, and then this one, and then this one, and then change in direction. Okay, so this is how magnetic flux is stored. So this arrow is the flux direction. Okay, at some point direction get changed. At that point the entry is updated. Okay, now let's say I want to write India. Okay, now there is a special method in which you can convert these characters into these numbers. Okay, I will show you in later sessions then how will you convert. These are simple mathematics. There is nothing rocket science behind it. Okay, so this is, if anyone asks you that in what way a hard drive, only hard drive, remember this is only hard drive, not SSD. SSD has some different method to store data. Whenever a hard drive is store a data, hard drive, mechanical hard drive, uh, very conventional hard drive, it is store data into magnetic flux form. Now this arrow, let's say this is 4 bits. Okay, these are 8 bits, which makes 1 byte, and these are 4 bits. Now, as per industry demand increases, what industry wants, what actual end user wants, they want higher storage. पहले storage होती थी 320 GB, 500 GB. Now, as per market requirement increases, demand increases, they want 2 terabyte, 4 terabyte, 8 terabyte of data to be stored in hard drive. Now, they don't want to expand the size of hard drive, but they want to increase the capacity of hard drive. So ultimately, पहले डाइपोल, पहले ये मैग्नेटिक फ्लक्स इतना एरिया लेता था, अब इस जो फ्लक्स है इसकी डायरेक्शन इन्होंने परपेंडिकुलर कर दी, मतलब अलोंग द सरफेस नहीं है,
अब अगेंस्ट द सरफेस है। पहले सरफेस ऐसे था, ग्रे वाला जो है सरफेस है, मैग्नेटिक फ्लक्स भी अलोंग द सरफेस था। नाउ इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ बिट्स मींस इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ बिट्स। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स आपका स्ट्रेट है, परपेंडिकुलर है। तो इन दिस मैनर more data can be saved within this stretch of data layer। पहले इसके अंदर कितनी बिट्स थी? 8 बिट्स थी, ठीक है, एक बाइट थी पूरी इतने रीजन के अंदर। अब नाउ यू कैन मेक एन assumption that how much it is approximately। इतने में अगर 4 बिट्स आ रही हैं तो इट्स approximately 32 बाइट्स, approximately 32 बिट्स। तो इट्स लाइक 4 बाइट्स। तो पहले 1 बाइट डेटा इस इतने में आ रहा था, अब उतने के अंदर आपका 4 बाइट डेटा आ रहा है। तो इट्स अ 4x विदाउट इंक्रीजिंग the size of hard drive, but increasing the capacity of hard drive. Basically, the hard drive nowadays is designed in such a way that the data, the bits, the magnetic flux is stored in a perpendicular direction as compared to previous one longitudinally. But again, market is not limited to 4 terabyte, 2 terabyte. They want more. Okay. They want 16 terabyte, 8, 12 terabyte hard drives. Okay, nowadays it is very much available in the market. So nowadays, in today's commercial market, we have a special kind of a hard drive. Before we have HMR, then we have perpendicular PMR, perpendicular magnetic recording. Now we have SMR hard drive, in which magnetic flux is overlapped with each other in order to increase the efficient space. Okay, this is we will discuss later on. But for today's, this is the topic which we have discussed is very critical. Okay, so I'm not giving you lots of things as of now because you are not done with your previous task. So now you have to do hands-on with your FTK Imager software, create a forensic image and then forensic clone. Okay, then you will let me know so that we can continue in our upcoming sessions how to view forensic image and how to extract the files from forensic image. We will take it in our upcoming sessions. This literature you will get it. Any queries as of now? If you guys have any query, you may ask. Else we can conclude today's session. सर हेलो Yes. सर अभी तुम बताए ना सर वो बाइनरी में कन्वर्ट होके ट्रांसफर होता है हार्ड डिस्क को अभी वो सभी फाइल को सेम बाइनरीज में कन्वर्ट होते हैं क्या जैसे कि अभी हमारे पास इमेज फाइल है वीडियो फाइल है Yes. सभी 0 1 में कन्वर्ट होता है सर Yes. ओके सर ये जो टास्क है परफॉर्म कैसे करेंगे थ्रू द सॉफ्टवेयर? Hmm. Forensic. जो आपने बोले Okay. ये फोरेंसिक, हाँ ठीक है, मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। रिकॉर्डेड सेशंस के अंदर ऑलरेडी है कैसे परफॉर्म करना है, बट अगेन मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। ये एफटीके मेजर है। ओके, देन गो टू फाइल, क्रिएट डिस्क इमेज, नाउ फिजिकल ड्राइव। जो भी पेन ड्राइव आप कनेक्ट करेंगे
तो यहाँ पे आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू में शो हो जाएगी। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास लेट्स से एक ये 1 टेराबाइट का हार्ड ड्राइव कनेक्टेड है, फिनिश करेंगे एंड देन अपना डेस्टिनेशन ऐड करेंगे। आपको लेना है इसमें E01। ओके, यहाँ पे कुछ अपने नोट्स बना सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं एंड देन ब्राउज करेंगे कहाँ पे इसको सेव करना है आपको, इंक्लूडिंग कोई फाइल नेम दे देंगे इसमें, और चंक साइज यहाँ पे अभी के लिए आप 0 कर देंगे, या फिर दूसरा एक अटेम्प्ट करेंगे जिसमें चंक साइज 1500, मतलब जो भी फोरेंसिक इमेज बनेगी आपका इक्वल चंक्स की बनेगी, और अगर 0 कर देंगे तो सिंगल फाइल बनेगी ऑफ सर्टेन साइज। ठीक है, इसको नहीं छेड़ेंगे इंक्रिप्शन कंप्रेशन को, एंड देन फिनिश करेंगे एंड देन ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपको फोरेंसिक इमेज बनानी है एंड देन हम जो नेक्स्ट सेशन में करेंगे उसके अंदर बताऊंगा कि फाइल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं फोरेंसिक इमेज से, और व्यू कैसे करते हैं फोरेंसिक इमेज को। ठीक है, but ओके सर। everything is there in recorded sessions. Akash will share you the URL. कोई और queries हैं, you may ask. Hello. सिस्टम से डायरेक्ट अगर आपके सिस्टम में कैपेसिटी है तो आप सिस्टम में भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 हार्ड ड्राइव्स हैं कंप्यूटर के अंदर, और जिसके अंदर रखेंगे आप सेव करेंगे उसका साइज अच्छा खासा है, कैपेसिटी अच्छी है उसकी, तो आप उसमें भी कर सकते हैं प्रैक्टिस, लेकिन उसमें टाइम बहुत लगेगा। 500 GB will take 3-4 hours. पेन मिनिमम ड्राइव कितना रहना? मिनिमम किस चीज का? लैपटॉप में अगर मिनिमम है तो कितना में हो जाएगा? आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 8 GB की पेन ड्राइव के ऊपर। 8 GB की पेन ड्राइव विल क्रिएट अ फाइल साइज ऑफ रफली, अगर वो फुल कैपेसिटी में लोडेड है तो इट विल टेक 4 GB, 4.5 GB, दैट्स इट। अगर लैपटॉप में सर 10 GB स्पेस है या 50 GB स्पेस है तो उसमें हो जाएगी ना? हाँ हाँ, आपका डेस्टिनेशन अगर 50 GB है आपके पास और 8 GB का पेन ड्राइव है तो उसमें हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, अभी कंक्लूड करते हैं आज का सेशन। इसका रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगा और कंटेंट भी। ओके गाइस, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।